Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start up another comprehension, that is she will thank you ma'am, and this is personally one of my favorite one because this one is a very profound lesson with very profound meanings. I always admire the comprehensions which have some good conscious morals or didactic sort of, I must say कि उसमें जो aspects वो होते हैं. She was a large woman with a large purse that had everything in it but a hammer and nails. It had a long strap and she carried it slung across her shoulder. It was 11 o'clock at night, dark, and she was walking alone when a boy ran up behind her and tried to snatch the purse. The strap broke. With a sudden single tug, the boy gave it from him, but the boy's weight and the weight of the purse combined caused him to lose his balance. Instead of taking off full blast as he had hoped, the boy fell on his back on the sidewalk and his legs flew up. The large woman simply turned around and kicked him right square in his blue jeaned sitter. Then she reached down, picked the boy up by his shirt front and shook him until his teeth rattled. ओके सो अब बताया जा रहा है कि एक औरत थी जो रात के 11 बजे वॉक करके वहाँ से यानी अलोन थी, स्ट्रीट से गुजर रही थी और उसके बैग था, उसने बैग के लॉन्ग स्ट्रैप थी, उसने उसमें हर चीज़ रखी थी, यहाँ तक कि हैमर एंड नेल थी. ठीक है, तो वो उसमें वो ना अब वो गुजर रही होती है और जो उसमें जाहिर है एक जो थीफ होता है वो ही पासेस बाय और वो जल्दी से उसको खींचने की कोशिश करता है. और नुकसान क्या होता है कि वो पर्स चूँकि भारी होता है तो वो पर्स का स्ट्रैप टूट जाता है और वो ना अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिर जाता है. और अगर तो उसे पकड़ती है वो उसे इतनी जोर से हिलाती है कि यहाँ तक कि उसके दांत जो हैं वो भी हिल के रह जाते हैं. आफ्टर दैट द वुमन सेड, पिक अप माय पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हियर. अच्छा, पॉकेट बुक क्योंकि वो खुल गया होगा, मे बी उसमें से चीज़ खुल गई. तो पॉकेट बुक वो होती है जो छोटी सी बुक होती है और उसके अंदर चीज़ें पड़ी होती हैं. तो वो उन्हें कहती है कि ये मुझे दे दो, ठीक है, ये मुझे पकड़ाओ फौरन. एंड शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली बट ही बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम टू stoop and pick up her purse. Then she said, now ain't you ashamed of yourself? अच्छा, अब वो उसे कहती है, उसने उसे पकड़ा होता है उस वक्त और उसे कहती है कि पकड़ो इसे और मुझे पकड़ाओ इस. लेकिन वो छोड़ती नहीं है, वो सिर्फ उसको थोड़ा सा बेंड डाउन होने और उसे पकड़ने की सिर्फ यानी इतनी उसको लेवरेज देती है. फॉर्मली गिव्ड बाय हिज शर्ट फ्रंट, द बॉय सेड यस. कहती है तुम्हें शर्म नहीं आई अपने आप पर? यस यानी वो ये कहते हैं आई एम मैम. व्हाट डिड यू वांट? वुमन सेड, फॉर इट आई डिडंट एम टू यू आर लाइव. कहते कि तुम क्या करना चाहते थे? कहते मेरा ये मकसद नहीं था. कहते तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम चोरी करना चाहते थे. तो कहा तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो. By that time 2 or 3 people passed, stopped, turned to look, and some stood watching. If I turn you loose, will you run? Asked the woman. Yes, ma'am, said the boy. Then I won't turn you loose, said the woman. She did not release him. Lady, I am sorry, whispered the boy. Your face is dirty. I got a great mind to wash your face for you. Ain't you got nobody home to tell you to wash your face? अच्छा, अब वो खातून जो होती है ना वो उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो. उस तरह में 2 से 3 लोग देखते हैं जो कि देखें कि क्या हो रहा है. कुछ एक वहाँ रुक के देखने लग जाते हैं. अच्छा, अब मैंने अगर तुम्हें छोड़ा तो तुम तो भाग जाओगे. वो से कहती है, वो कहती है कि वो कहते हैं यस मैम. देन वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं. वो से यानी उसको कहती है कि अगर तुम्हें मैंने छोड़ दिया तो क्या तुम भाग जाओगे? कहते हैं हाँ. तो कहती बस फिर वो उसको जोर से टाइटली पकड़ के रखती है. वो कहती है लेडी, वो कहते हैं लेडी आई एम सॉरी. वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दें. लेकिन कहते हैं कि तुम्हारा फेस कितना गंदा है कि तुम्हें कोई घर में नहीं बताता कि तुम अपना मुंह साफ करो. चलो मैं तुम्हारा मुंह धुलवाऊँ. नो मैम. कहते हैं कि नहीं मैम रहने दें. देन इट विल गिव इट वॉश्ड इन दिस इवनिंग, सेड द लार्ज वुमन starting up the street, dragging the frightened boy behind her. क्या कहते तुम्हारे घर में कोई नहीं तुम्हें बताता कि तुम अपना मुंह धो? तो कहते हैं कि नो मैम कोई भी नहीं बताता. तो कहते हैं कि चलो फिर आज शाम तुम्हारा मुंह धुलवाती हूँ, ठीक है. Then it will get washed this evening, said the large woman, starting up the street, dragging the frightened boy behind her. He looked as if he were 14 or 15, frail or willow wild, in tennis shoes and blue jeans. The woman said, you ought to be my son. I would teach you right from wrong. Least I can do
राइट इज टू वॉश योर फेस। कहते तुम्हें तो मेरा बेटा होना चाहिए था, फिर मैं तुम्हें बताती कि मुंह कैसे धुलवाते, एटलीस्ट मेरा मुंह तो सही तरीके से तुम्हें धोना सिखाती। क्या तुम भूखे हो? तो वो कहते हैं नो मैम, सेड द बीइंग बैग्ड बॉय, आई जस्ट वॉन्ट टू टर्न मी लूज। अच्छा, वो कहते हैं कि नो मैम, मैं ये नहीं मैं भूखा नहीं हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दें। Was it bothering you when I turned that corner? asked the woman. क्या मैंने तुम्हें कुछ कहा था जब मैं वहाँ से गुजर रही थी? कहते नो मैम, आपने मुझे कुछ नहीं कहा था। But you put yourself in contact with me. लेकिन तुमने मेरे साथ ये तुमने मुझे खुद को मेरे साथ जो है कांटेक्ट में लिया। If you think that this contact is not going to last a while, you got another thought coming when I get through you, so you are going to remember Mrs. Lula Bates, Washington Johns. अच्छा जी, वो कहते हैं कि अब तुम चूंकि मेरे कांटेक्ट में आ गए, अब तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगा कि मिसेस लूला बेट्स वॉशिंगटन जॉन्स कौन थी। Sweat popped out of the boy's face and began to struggle. Mrs. Johns stopped, jerked him around in front of her, put a half Nelson about his neck, and continued to drag him up the street. अच्छा जी, अब मिस लूला बेट्स ने उसको जो है ना वो अपने कहते हैं कि मैम मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मुझे लूजली छोड़ दें और कुछ भी नहीं, लेकिन वो सिर्फ उसे ड्रैग करके अपने सामने लेकर आती है और उसके जोर से उसका दोबारा से नेक पकड़ लेती है कि वो अपने आप को छुड़वा ना सके। ठीक है, और फिर वो जो है उसे घसीटती हुई जो है वो स्ट्रीट से निकलती है। When she got to her door, she dragged the boy inside, down a hall, and into a large kitchenette-furnished room at the rear of the house. She switched on the light and left the door open. The boy could hear other roomers laughing and talking in the large house. Some of their doors were open too, so he knew he and the woman were not alone. The woman still held him by the neck in the middle of her room. अच्छा, वो उसे लेकर आते तो इंटर हॉल किचनेट रूम होता है, लाइक वो काफी बड़ा सा रूम होता है जहाँ पे दूसरे, अब उसे पता चलता था कि घर में वो अकेला नहीं है क्योंकि लोगों की और की भी आवाजें आ रही होती हैं जब रूम खुला हुआ होता है। अच्छा जी, तो वो साथ में उसे ना वहाँ पर जब लेकर आती है तो वो एक किचनेट फर्निश रूम होता है, यानी कि वो एक ऐसा रूम होता है कि जहाँ पर किचन ओपन किचन सॉर्ट ऑफ वो रूम होता है। शी सेड व्हाट्स योर नेम? रॉजर, आंसर्ड द बॉय। Then Roger, you go to sink and wash your face, said the woman. Whereupon she turned him loose at last. और वो उसे कहती है कि तुम्हारा नाम क्या? वो कहते हैं मेरा नाम रॉजर है। तो कहते हैं कि अच्छा चलो, वो फिर उसको लूज छोड़ देती है। उसे कहती है कि जाओ और अपना मुंह धोकर आओ रोजर। अच्छा जी, let the water run until it gets warm, she said. Here is a clean towel. अच्छा, वो कहती है कि तब तक उसे खुला रहने देना टैप को कि जब तक कि गर्म पानी नहीं आ जाता, और ये साफ तौलिया लो। You're gonna take me to jail? asked the boy, bending over the sink. क्या आप मुझे जेल भिजवाएंगी? Not with that face, I would not take you nowhere. तो कहते हैं कि इस शक्ल के साथ तो मैं तुम्हें कहीं पे भी नहीं लेके जाऊंगी या भिजवाऊंगी। Said the woman, here I am trying to get home to cook me a bite to eat and you snatched my pocketbook. Maybe you ain't been to your supper either, late as it be, have you? अच्छा, तो वो कहते हैं कि इस वक्त जबकि मैं घर पे अपने आप खाना खाने के लिए लेकर आ रही थी तो तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की और मुझे तो लगता है कि तुमने तो शाम का खाना भी नहीं खाया। There is nobody at my home, at my house. वो लड़का कहता है कि मेरे घर में कोई भी नहीं रहता। Then we will eat, said the woman. तो उसने कहा चलो फिर हम इकट्ठे खाएंगे। I believe you are hungry and been hungry or tried to snatch my pocketbook. वो कहते हैं कि इससे मुझे पता चलता है कि तुम भूखे हो और इसीलिए तुम कब से भूखे हो और इसीलिए तुमने जो है मेरी पॉकेट बुक जो है वो चुराने की या मेरा पर्स लेने की तुमने कोशिश किया। I want a pair of blue suede shoes, said the boy. उसने कहा कि मैं blue suede shoes लेना चाहता था इसलिए मैंने ये काम किया। Well, you didn't have to snatch my pocketbook to get some suede shoes, said Lola Bates Washington. You could have asked me, ma'am. कहते कि तुम्हें चुराने की जरूरत नहीं थी, तुम मुझसे मांग लेते, मैं तुम्हें पैसे दे देती। The water was dripping from his face. The boy looked at her. There was a long pause, a very long pause. After he had dried his face, not knowing what else to do, dried it again. The boy turned around, wondering what next. The door was open. He could make a dash for it down the hall. He could run, run, run. The woman was sitting on the day bed. After a while, she said, I were young once, and I wanted things that I could not get. There was another long pause. The boy mouth opened. Then he frowned, and knowing
He frowned. The woman said, You thought I was going to say, but didn't you? Thought I was going to say, but I didn't snatch people's book. Well, I wasn't going to say that. अच्छा, उसने कहा कि तुम अब यही सोचना चाह रहे हो, सुनना चाह रहे हो कि एक वक्त में मैं भी काम करती थी, तो मैं बता दूं कि मैंने कभी लोगों के पर्स नहीं छीने थे. Say for silence. Okay, I have done things too, which I would not tell you, and everybody's got something in common. So sit down while I fix up something to eat. You might run that comb through your hair so you will look presentable. And she gives him a comb और उसे कहती है कि ये अपने बालों में फेर लो और ताकि तुम प्रेजेंटेबल लगने लग जाओ, ताकि तुम साफ सुथरे और ऐसे कि अपनी तुम्हारी शक्ल जो है वो साफ प्यारी सी लगने लग जाए. In another corner of the room behind the screen was a gas plate and an ice box. अच्छा, वो सब उसे अकेला छोड़ देती है to see कि क्या वो भाग जाएगा या वो वहाँ रहेगा. और वो उस वक्त वहाँ से जा सकता था, वो उस वक्त वहाँ से भाग भी सकता था क्योंकि डोर तो खुला हुआ था, लेकिन वो वहीं पर ही रहता है. The woman did not watch the boy. और वो कहती है कि तुम यहाँ बैठो कि मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ. और उस औरत ने पीछे नहीं देखा कि वो है या वो वहाँ से चला गया है. If he was going to run now, nor did she watch her purse. और उसने अपना पर्स भी नहीं देखा, यानी वो उसे अपने कॉन्शियस के साथ अकेले वहाँ पर अकेला छोड़ देती है. The woman did not watch the boy to see if he was going to run, nor did she watch her purse, which she had left behind her on the daybed. But the boy took care to sit on the far side of the room, away from the purse, where he thought she could easily see him out of the corner of her eye if she wanted to. लेकिन वो लड़का इस वक्त उसकी आँख के बिल्कुल सामने परस से बहुत दूर बैठा होता है ताकि वो खुद उसको दिखाए कि वो उसका पर्स को हाथ नहीं लगा रहा या किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगा रहा है. She could easily see him out of the corner if she wanted. He did not trust the woman not to trust him, and he did not want to be mistrusted now. Do you need somebody to go to the store? Asked the woman. Maybe to get some milk or something. Don't believe I do. Said the woman. Unless you just want sweet milk yourself, I was going to make cocoa out of the canned milk I got here. अच्छा, तो वो लड़का पूछता है कि क्या तुम्हें कोई बंदा चाहिए जो तुम्हें स्टोर से चीज़ें ला दे, मे बी कुछ दूध और कुछ ऐसा. वो कहते कि नहीं, डोंट बिलीव आई डू. कहते कि नो, आई हैव गॉट केन्ड मिल्क एंड ऑल, दैट्स फाइन, दैट विल बी फाइन. ओके. शी हीटेड सम लीमा बीन्स एंड बीफ she had in the ice box, made the cocoa, and set the table. The woman did not ask the boy anything about where he lived or his folks or anything else that would embarrass him. Instead, as day she told him about her job in a hotel beauty shop that stayed open late, where the work was like, and how all kind of women came in and out, blondes, redheads and Spanish. And then she cut him in a half of her 10-cent केक. ओके. अब उस औरत ने उस लड़के से कुछ भी नहीं पूछा. इनफैक्ट वो सिर्फ उसे अपने बारे में बताती रही कि वो कहाँ काम करती है और जिस होटल में वो काम करती है वहाँ पे लेट आवर्स तक उसे काम करना पड़ता है और कौन कौन सी औरतें जिसमें ब्लॉन्ड जिनके गोल्डन बाल होते हैं और रेड बाल होते हैं वो औरतें आती हैं. ईट सम मोर सन, थोड़ा सा और खाओ लड़के. When they were finished eating, she got up and said, now here, take this $10 and buy yourself some blue suede shoes, and next time do not make the mistake of latching onto my pocketbook or anybody's else, because shoes got by devilish way will burn your feet. That's beautiful. वो कहती है लेकिन आइंदा के बाद तुम ये अच्छा उसे मीनू से 10 cent केक में से उसे केक भी देती है और फिर उसे कहती है कि देखो वो जूते जो तुम शैतान के रास्ते पे चल के हासिल करोगे ना वो तुम्हारे पाँव जला देंगे. I got to get my rest now. अब मुझे आराम करना है. But from here on in my son, I hope you will behave yourself. और मैं अब एक्सपेक्ट करती हूँ कि आइंदा के बाद तुम अपने आप का ख्याल रखोगे. She led him down the hall to the front door and opened it. Good night. Behave yourself, boy, she said, looking out into the street as he went down the step. कहते अच्छा वो उसके बाद वो उसे गुड नाइट कहता है और वो दरवाज़ा खोलती है, उसे कहती है गुड नाइट और बिहेव योरसेल्फ बॉय और आइंदा से अच्छे से काम करना.
The boy wanted to say something other than thank you ma'am to Miss Lula Bates Washington Jones, but although his lips moved he couldn't even say that. He turned at the foot of her barren stoop and looked up at the large woman in the door, then he shut the door. और वो वहाँ से उतरा और सामने देख रहा था और वो उन्हें बहुत कुछ कहना चाहता था थैंक यू के अलावा भी, लेकिन वो ये भी नहीं कह सका जबकि वो मिस लूला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स को सामने देख रहा था। अच्छा जी, तो अब थीम देखेंगे। अ वुमन टॉट अ विकेट बॉय राइट फ्रॉम रॉन्ग व्हेन ही ट्राइड टू स्नैच हर पर्स लेट एट नाइट, कि किसी को किसी बुराई में से अच्छाई दिखा देना ही खूबसूरती है जिंदगी की। द बॉय लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल ऑन द साइड वॉक। ही गॉट द बॉय बाय हिज neck and gave him some jerks and dragged him her house, and she directed him to wash his face, and she offered him cake $10 to buy a new pair of suede shoes, and the boy became very much impressed by the good conduct of the lady and promised to be a good boy. तो ये थी आज की हमारा कॉम्प्रीहेंशन। अब इसकी एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे जूम की प्रेजेंटेशन, जूम की ऑनलाइन सेशन में। आई होप आपको लेसन समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो वो ज़रूर तैयार रखें, मैं आप लोगों के उन क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।